साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 टिश्यूज इन एक्शन पढ़ रहे थे। प्लांट टिश्यूज ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो पुरानी वीडियो जाकर चेक कर लेना। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होते हैं एनिमल टिश्यूज? लाइक प्लांट, एनिमल सेल्स ऑल्सो ग्रुप टुगेदर एंड स्पेशलाइज इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो प्लांट्स के जैसे ही एनिमल सेल्स भी जो ग्रुप होते हैं टुगेदर, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स cells also group together and specialized in performing different functions. These group of similar cells form animal tissue. अब ये जो एनिमल टिश्यू होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। एनिमल टिश्यू is of 4 types. First है epithelial tissue. Epithelial tissue. Second, connective tissue. Third, muscular tissue. Fourth, nervous tissue. अब हमको इन्हीं 4 टाइप के टिश्यूज को डिटेल में पढ़ना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू। It forms the outer covering of the body, that is skin, and also lines the internal organ such as mouth, lungs, blood vessels, and intestine. It forms the outer covering of the body, that is skin, and also lines the internal organs such as mouth, lungs, blood vessels and intestine. तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये स्किन मीन्स बॉडी के आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है और इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन करता है, मीन्स सराउंडेड होता है, इंटरनल ऑर्गन को कवर करता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स विथ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। इट इज composed of closely packed cells with very little space between them. तो इन सेल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस प्रेजेंट होता है।
और जो सेल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, functions of epithelial tissue, functions of epithelial tissue। तो सबसे पहला फंक्शन है epithelial tissue help in rapid diffusion of lipids and gases। epithelial tissue helps in rapid diffusion of gases and liquids। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये गैसेस और लिक्विड के डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी friction and entry of microbes। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये अंडरलाइन टिश्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इंजरी और फ्रिक्शन से भी हेल्प करते हैं और एंट्री ऑफ माइक्रोब्स को भी रोकते हैं। थर्ड, production and secretion of mucus, enzymes, hormones, sweat and saliva। Production and secretion of mucus, enzymes, hormones and sweat एंड सलाइवा। तो म्यूकस, एंजाइम, हार्मोन, स्वेट एंड सलाइवा के प्रोडक्शन और सिक्रीशन में भी एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। नेक्स्ट है फोर्थ, सेंसरी फंक्शंस, स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड बैलेंस। फोर्थ, सेंसरी फंक्शंस, smell, taste, sound and balance। तो सेंसरी फंक्शन जैसे कि स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड बैलेंस में भी एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, efficient uptake of nutrients, water, etc. Efficient uptake of nutrients, water, etc. तो एब्जॉर्प्शन में भी एपिथेलियल टिश्यू हेल्पफुल होता है। Epithelial tissues form the body's protective barriers. They line our cavities and make up our glands. Specialized for absorption, secretion, and transport. अब जो हमारा नेक्स्ट टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, the tissue that connects and supports other tissues is called connective tissue। The tissue that supports and connects other
tissues is called connective tissue. Both bones and bloods are examples of connective tissue. तो ऐसे टिश्यू जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं या कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिसका एग्जांपल्स हैं बोन्स एंड ब्लड्स. ब्लड. द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन. द रेड color of blood is due to hemoglobin. तो जो ब्लड का रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, which is an iron rich protein in the red blood cells. An iron rich protein in the red blood cells, that is RBC. तो ये जो ब्लड का रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जो कि एक आयरन रिच प्रोटीन होता है. रेड ब्लड cells live for about 4 months and are replaced regularly. RBC live for about 4 months and are replaced regularly. तो ये जो RBC है ये 4 months तक लाइव रहते हैं, अलाइव रहते हैं. 4 months means 120 days and are replaced regularly. Connective tissues bind and support the body. They form a dynamic and intricate structural framework, composed of fibers, cells, and a fluid ground substance. Second है platelets. Platelets. These help in blood clotting at the site of injury. These help in blood clotting at the site of injury. तो जब भी हमको चोट लग जाती है तो कुछ टाइम बाद ब्लड अपने आप निकलना बंद हो जाता है. वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट है WBC. थर्ड WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स. इसके पहले जो हमने पढ़ा वो थे रेड ब्लड सेल्स और ये है वाइट ब्लड सेल्स, दैट इज WBC. These collect at infected areas causing pus formation. These collect at infected areas causing pus formation and inflammation causing redness and swelling and possible pus formation at the infected area. Blood consists of several types of specialized cells. Red blood cells transport oxygen throughout the body. White blood cells are a sent immune defense. And platelets or thrombocytes are small, irregular cell fragments.
they play a crucial role in blood clotting and wound healing. When activated, they change shape and release signaling molecules. कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है बोन्स। बोन्स आर हार्ड, सॉलिड एंड रिजिड ड्यू टू द composition of connective tissue. These are hard, solid and rigid due to the composition of connective tissue. तो बोन्स होते हैं हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड रिजिड होते हैं, लेकिन ये भी कनेक्टिव टिश्यू के ही एग्जाम्पल होते हैं। और ये हार्ड क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। एग्जाम्पल्स ऑफ बोन्स आर कॉलर बोन, लॉन्ग बोन, kneecap, etc. Cartilage. Fifth, cartilage. It is a soft jelly like matrix, provide flexibility and कुशनिंग। तो ये जो कार्टिलेज है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग प्रोवाइड करता है। Bone and cartilage are specialized connective tissues. While cartilage is flexible, bone is highly calcified. Together, they form our skeletal system. इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।